Ladies and gentlemen, over the last 2 months or so, every political party has pitched itself to young India in the hope that they will vote for them. And why not, given that 21 crore voters in India are under the age of 25? But here's the thing. Young India is simply not interested in voting. And I'm not saying that, the Election Commission is. They have put out data that says that only 38% first-time voters have actually bothered to register themselves for the upcoming elections. Ladies and gentlemen, there are 1.8 crore new voters this time. Let me repeat that figure for you. 1.8 crore. These are teenagers between the age of 18 and 19. 60% of them are so disinterested in the election process that they have not even bothered to enroll themselves in the voter list. Not even someone like an Ayushman Khurrana, roped in by the Election Commission, has been able to make a dent in this apathy. And apathy it is. The largest states in India are actually the largest offenders. Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra, they have the lowest number of first-time voters who have bothered to enroll themselves. Bihar is a curious case, ladies and gentlemen. Bihar is a state with the country's maximum youth population. What is the enrollment rate with the Election Commission as far as first-time voters are concerned? Just 17%. Can you believe that? This is followed by India's national capital, Delhi. Out of 7.2 lakh young people, only 1.5 have actually registered to vote, which means 80% will not show up at a voting booth when it comes for the city to vote. Uttar Pradesh is next in line, where only 23% young people or first-time voters have enrolled. The number is at 27% in Maharashtra. We've given you the worst, let's give you the best as well. India's newest state, Telangana, is showing the way. This is where 67% first-time voters have registered themselves. This is followed by Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh, where 62% and 60% young voters have registered. But the question is this: why this disinterest? Why have 60% of young voters decided they will not vote this time? Is it disinterest, or is it aversion to the political ecosystem that thrives on controversies and slugfests and not on issues that actually matter to the young people in this country? Let me go straight across to my guests who are joining me this evening. Naved is joining us from the national capital, a brand ambassador for the Election Commission. Dr. S.Y. Qureshi is a former chief election commissioner, joining us as well. Chaitanya Prabhu is founder and CEO. Mark your presence. Thank you very much. Naved, I'm going to come to you first. क्यों? कोशिश तो बहुत हो रही है. आयुष्मान खुराना बार-बार बोल रहे हैं, प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ. आप रेडियो पे बार-बार बोल रहे हैं, प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ, स्पेशली इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम वोटर. ये एपैथी है क्यों? भाई पहली बार वोट करने के लिए तो लोगों को एक्साइटमेंट होना चाहिए कि अब आई हमारी बारी, अब हमारा आया नंबर. बट इट सीम्स द ऑपोजिट इज ट्रू. व्हाई? श्वेता, मुझे लगता है कभी कभी कि खास तौर से यंगस्टर्स, अनफॉर्चुनेटली जो नंबर्स आप बता रही हैं, खास तौर से कुछ स्टेट्स को लेके, इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में ही जो नंबर्स हैं वो बहुत कम हैं, इंटरेस्ट नहीं है, डिसइंटरेस्ट है इनका. मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर इंसान, खास तौर से जो यंग है, वो अपना फ़ायदा देख रहा है. मैं अभी ये समझा रहा था कि आईपीएल की टीम बनाने के लिए हम बैठे बैठे टीम बना लेते हैं और अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये अगर बैट्समैन हो मेरी टीम में, ये अगर बॉलर हो और ये अगर कैप्टन हो तो हमारी टीम अच्छी बनेगी. वहीं पे अगर कोई मूवी, जैसे मैंने कई यंगस्टर से बात करी है कि आप अगर कोई मूवी बनाना चाहें और आपको लगे कि वो मूवी चल सकती है तो किस किस को आप कास्ट करेंगे, तो वो खुद बताते हैं, वो एक झटके में बता देते हैं. मैं इस एक्टर को लूंगा, स्टोरी लाइन ये होगी, मैं म्यूजिशियन ये रखूंगा. वहीं पे मैं ये पूछता हूं, जब इतनी बड़ी बात तुम फैसला ऐसे 5 मिनट में ले सकते हो, तो सरकार बनाने के लिए एक कदम बढ़ के तुम ये क्यों नहीं सोच रहे कि जहां पे आपकी टीम खेलेगी, जहां पे आपकी मूवी चलेगी, उस देश की सरकार बनाने में आपको इतनी आफत क्यों आती है? आप वोट कास्ट करने के लिए क्यों नहीं जाते हैं?
मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ चीजों में ना खास तौर से यंगस्टर्स में श्वेता थोड़ा सा इंटरेस्ट ऐसे पैदा करना पड़ेगा। मैं एक दिन ये बैठ के सोच रहा था कि क्या ये पॉसिबल है जब इतना परसेंटेज डाउन है कि जब 18 का होता है इंसान तो वो अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। हम लाइसेंस जब ही अप्लाई करें जब आप इतना मेच्योर हो जाएं कि आपको ये पता हो कि आप जिस देश में मोटर बाइक चलाएंगे उस देश की सरकार कौन सी चुननी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप अगर वोट कास्ट करते हैं तो ही आपका लाइसेंस बन पाए। प्यार से मैंने बहुत बार समझाया और इनफैक्ट मैं अभी भी प्यार से ही समझाऊंगा कि ये आपका हक है। ये ऐसी चीज है जिसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ रहे। आप लाइसेंस बनवाते हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं। आप सरकार बनवाते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने इतनी आसानी कर दी है, इतनी आसानी कर दी है कि कोई वजह है नहीं। कई जगह मैंने देखा था कि जो लोग नहीं जा सकते वोट डालने के लिए वहां पर वो शटल्स भेजते हैं कि इलेक्शन बूथ तक पहुंच जाएं, किसी तरह वोट डालें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी अगर ये परसेंटेज कम है तो मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर ये जिम्मेदारी लेता हूं। मैं अभी भी यूथ में, कॉलेजेस में जाके मैं ओथ तक दिलवाता हूं। हालांकि वो मेरी अपनी बनाई हुई ओथ होती है कि आप ये वचन लीजिए कि आप किसी को भी इलेक्ट करें। आपको मालूम है, मैं जितने लोग मुझे देख रहे हैं खासतौर से यंगस्टर, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ही वोट ना कास्ट ना करने से क्या होगा। ये सोचिए, इस देश में 150 करोड़ की आबादी है। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपके दिमाग में ये बात आई है कि मेरे ही वोट ना कास्ट करने से क्या होगा। ये हर किसी के आ सकती है। फिर तो इलेक्शन कमीशन को कोई काम ही नहीं रह गया, फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। क्योंकि एक भी आदमी एक सोच रहा है ना कि यार 100 करोड़ की आबादी है, मैं नहीं डालूंगा, कौन सी आफत आ जाएगी। आप इतने इंटेलिजेंट क्यों बन रहे हैं? ये तो हर किसी के दिमाग में आ सकता है। सो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपका हक है। फिर 5 साल पछताएंगे और जो वोट कास्ट नहीं करता उसको लगता है कि नहीं किया, इनडायरेक्टली वो अपने ओपोनेंट को जितवाता है। आप समझ रहे हैं? वोट कास्ट ना करना का मतलब है आप जिसको नहीं चाह रहे कि वो जीते, वो जीत रहा है। Okay. Okay. Chaitanya Prabhu, you are someone who looks at the issue very closely. You are founder and CEO of Mark Your Presence. Why do young people not want to mark their presence in India's democratic process? Are they too lazy? Or is the general theme in their life, अरे सारी political parties तो एक जैसी हैं, क्या फायदा इनको वोट देने का, होना क्या है? Yes. So first of all, thank you for having me here. And I feel this notion where people say young people are not interested is wrong. And I say that because last 6 years I've been going to different campuses to understand the pulse and beat of young students. But to blame them for not coming out suddenly, I think is a little too much. And I'll tell you why. Is because young people are not coming out to vote for a couple of reasons, and they're not registering in large numbers because of some reasons which I'll state today. Number one being there is no concept of voter education in any school, any college. No syllabus talks about it. So how do you suddenly expect young people to suddenly come out and be political? Second, political parties do not give tickets to young people. If you've seen the amount of people that are young in our parliament, you will get the answer. Third, no young person is involved in decision making. That being a very important factor. Even if you look at the current Indian budget, you will see how less the allocation of Ministry of Youth Affairs and Sports is. Then moving on to an important crucial aspect is that when we talk about voting in any democracy, I truly believe that it needs to be taught. It needs to be explained. And that is sadly not happening. Everybody wakes up closer to the election to just blame young people. But young people have their own demands. They have their own thoughts. But nobody is there to listen to us. There is Chaitanya. No, Chaitanya, all that is fine. All that is fine. But when you say that there is nothing about voting rights and voting awareness as far as our school syllabus or college syllabus is concerned, I mean, why do you need to put it in a syllabus? This is not something that you need to learn in school. Don't you see your parents every year and every 5 years go to a polling booth and cast their vote? Isn't that enough? I mean, what is the voter education that is required to ask people to go and vote? And B, you're talking to me about, Chaitanya, hear me out. B, you're saying that they don't feel represented. That if you look at the age profile of people we choose as our MPs, they simply don't, connect with young people in this country. Now, you can't expect political parties to start giving tickets to people who are 18, 20 or 25, right? No, that's not what I'm saying. I'm saying that increase the representation.
I'm saying if you want young people to come out to vote, there needs to be a space for us. And to answer your question, what I mean by being political or understanding voter awareness is not just to say that you're 18, you can go out to vote, but it's also to explain the process. Young people need to understand what went to getting this right to vote. It was just not the constitution and then you get the right to vote. There was a process that was followed. Somebody fought and died for the vote that you have today. People who are older than us understand this struggle. People who are old understand this struggle. Who will explain it to us? This needs to be, according to me, explained at campuses. And somewhere down the change will only come when we actively speak about it and make politics a topic that is not bad. It is sadly politics. Naved, is that shifting the blame? That no, you must be aware that Naved, is it shifting? एक मिनट चेतन एक मिनट. Naved, is this shifting the blame? मैं आपको बताती हूँ क्यों. अब हमें बोल अब चैतन्य is a young person और ये हमको बोल रहा है कि politics has to be part of the conversation. Unfortunately, in the last 8 years, 9 years, politics has become such a big part of the conversation कि हर WhatsApp group में तो लड़ाई हो जाती है mamas and buas and chachas के बीच में. So how is it possible that young people in this country are completely divorced from the politics that is happening around this country? In fact, they are people, young people have a mind of their एक मिनट young people have a mind of their own. They know who they like and who they don't like. Students, ma'am, for the last 25 years in Mumbai, there has been no students' election union. If you talk about politics on campus, there are no representatives. Only political party representatives are not the way to try and get young people into politics or young people into participate in the process of elections. ठीक है चैतन्य. Okay, let Naved respond. Naved, बोलो. श्रेया, चेतन, आप जो बोल रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि एक जमाना था जब पॉलिटिक्स को लोग, ये इसमें कोई दो राय नहीं, जब पॉलिटिक्स को लोग बोरिंग समझा करते थे. बहुत पहले की बात है, जब मेरा बचपन था या आपका भी बचपन होगा, बहुत बोरिंग समझा करते थे, इंटरेस्ट नहीं लेते थे. आप अगर देखें आजकल की पॉलिटिक्स में हर बच्चा इंटरेस्ट लेता है व्हाट्सएप पर, चाहे वो मीम के जरिए हो. कोई यंग इंसान ऐसा नहीं है जिसको पॉलिटिक्स के बारे में ना पता हो. कोई यंग बच्चा ऐसा नहीं है जिसको ये पता ना हो कि वोट करके उसका वोटिंग राइट है. सिर्फ हमें लगता है, अच्छा आप मुझे बताइए कौन सा आप कह रहे हैं कि सिलेबस में हम डाल दें. सिलेबस में भी डाल सकते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, व्हाट्सएप पे आने के लिए, इंस्टाग्राम पे आने के लिए, स्नैपचैट पे आने के लिए कोई सिलेबस में नहीं डलता है. कोई टीचर नहीं बताता है कि आप स्नैपचैट पे आ जाइए तो आपको फायदा होगा. हमें एक्चुअली ये खुद समझना होगा, ये खुद की एक जिम्मेदारी. देखिए इलेक्शन कमीशन किसी के घर घर जाके ये नहीं बोल सकते उठो चलो वोट डालो, और दे आर मैच्योर इनफ, दे आर 18+. बस मुझे कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत है, जो मुझे ऑनेस्टली ये लगता है. जैसे मैं कई स्टूडेंट से बात करता हूं, मैं पूछता हूं कि तुमने वोट कास्ट क्यों नहीं किया. बोले सर मुझे ना थोड़ा सा मजा नहीं आता उसमें. हालांकि उसको मालूम है, अगर उससे पूछूं कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो, एक फौरन बताएगा कि ये वाली पार्टी. क्यों सपोर्ट करते हो, इसलिए करता हूं. कौन सी जीतनी चाहिए, ये वाले. वोट क्यों नहीं करते, ये नहीं मालूम सर, ये नहीं मालूम मुझे वोट क्यों नहीं करता. कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है और हमारी हो सकता है. एक दिन की छुट्टी मिल गई को थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाना हो. बिल्कुल सब वोटिंग से ज्यादा खुशी होती है उनको, ट्रस्ट मी, के एक दिन की छुट्टी मिल गई, कि सुबह उठेंगे 11 बजे 12 बजे आराम से उठेंगे, पूरा दिन अपना ऐश से काटेंगे. लेकिन ये नहीं मालूम कि पूरा दिन ऐश से काटने से आपके 5 साल जो बिना ऐश के गुजरेंगे. अगर आप जिस पार्टी को चाहते थे वो पार्टी नहीं जीती, क्योंकि आप ही जिम्मेदार है ना, आप वोट नहीं कास्ट कर रहे, तो आप जिम्मेदार हैं. फिर रोते रहिए 5 साल तक है यार मैं काश में कर देता वोट. Chaitanya, we don't want to sound like two old people who are berating young people in this country, but young people in this country also have to take responsibility and not pass the blame and not pass the blame on everyone for things that they aren't doing that they should be doing. No, simple casting a vote. No, exactly. I agree with you that it needs to increase, the interest needs to build out, but then we need to ask the question that why is this happening? And instead of only putting out the blame that young people are disinterested, we also need to make fundamental changes from down to make sure it doesn't happen. And that's what I'm trying to explain, that if we bring out these changes, there will be a different outcome, because young people need to understand
Like you said, being on WhatsApp and being on Instagram and Snapchat is cool. Voting isn't cool in today's time. So we need to make it. And how do we do it? From schools and No, colleges. maybe we need create the culture. maybe we need to make voting compulsory in this country. Maybe we need to make voting compulsory in this country. I think that may be one way to fix the problem. But then there are, questions of red lines that will be crossed, not crossed, etc. We leave it there. To go about yeah it. well that you're right, that may not be the most democratic way, but sometimes you require extreme solutions for extreme problems, and this is an extreme problem when the future of this country is not interested in choosing the future of this country. We may also Chalo, then we leave it there for the moment. I'm glad put in young people to represent us as well. I think that should also be compulsory, because somewhere down that disconnect is also increasing. Okay, but again, as I said, Chaitanya, I don't think it's a good idea for any political party to give a 20. I mean, when you talk about representation, what do you mean? Ticket for younger people, right? But would you want your country? But but would you representation? No, I'm saying, would you want your country to be run by a 35-year-old? Nahi, na. No, some jobs require the experience. So harping on experience, giving young people representation may not help. Parliament is what I'm saying. I'm not saying a 35-year-old has to run the country. I'm saying more young people need to be in parliament. I'm not saying a 35-year-old has to run the country. And all I'm trying to say through the process is, if you want young people to participate, then you've got to remind them the struggle that has come to get this right to vote. No, you have to reiterate this as well. Naved, बोलिए. Not only going to happen. Right. मैं भी ये चाहता हूँ कि 35 years के लोग पार्लियामेंट में हो, लेकिन 35 एज के पार्लियामेंट में लोग जब होंगे, जब वो 18 पे वोट को समझेंगे कि वो वोट कास्ट करें. सडनली 18 से लेकर 32 तक कोई वोट नहीं कर रहा और 35 पे आके पार्लियामेंट में बैठने का कोई मतलब नहीं बैठता. मतलब मैं उसको अगर आइडियल मानता नहीं. आप अगर जिंदगी भर भी पार्लियामेंट में ना बैठे, कोई भी यंगस्टर, मान लीजिए एक दफा को हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं आपको, जब भी यंगस्टर्स को वोट तो डालना है ना, चाहे वो 35 से अबव चला रहे. हम ये नहीं बोल सकते कि 35 एज का कोई पार्लियामेंट में नहीं है इसलिए यंगस्टर्स वोट नहीं डाल रहे. ये कह नहीं सकते हम. ये गलती हमारी है. आप ही तो बदल सकते हैं ना पार्लियामेंट. ये लॉजिक नहीं है. सारी चीजें तो आप 18 से बदलना शुरू करिए. गलती कहीं ना कहीं यंगस्टर्स की है. तो मैं आपको समझा रहा हूँ सर कि कर रहे हैं. हमने रिसेंटली लास्ट मंथ एक यूथ मैनिफेस्टो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है. सारे यंग लोग आके हमें अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं. अगर इंटरेस्ट नहीं रहता तो क्यों आके सामने से बताते हैं. So what I'm trying to say is, people are interested. Slowly लोग जुड़ रहे हैं. But suddenly we cannot expect young people to suddenly wake up and be like, you know what, you have to all come out and do it. It will take its time. And it's happening slowly. हमारे पास एक document है. 18 years, you don't become 18 suddenly. उसमें से 1.75 crore voters young है. उसमें से अगर आप मुंबई का पॉपुलेशन देखोगे तो मुंबई के वोटर्स आकर सामने से बता रहे हैं कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है. तो स्लोली ये चेंज आएगा. बट एक प्रोसेस होता है हर चीज फॉलो करने के लिए, और वो टाइम लगेगा उसके लिए. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज इट, आप मुझे उनमें उनकी एक प्रॉब्लम बता सकते हैं. एक प्रॉब्लम है कि प्लेसमेंट सेल्स बनते हैं. आप उनकी कोई भी एक प्रॉब्लम बता सकते हैं. आप कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम बताई. प्लेसमेंट सेल्स बनते हैं कॉलेजेस में, उसके बाद प्लेसमेंट गारंटी नहीं होता है एट दिस पॉइंट. ये एक प्रॉब्लम है. ओपन स्पेसेस का एक प्रॉब्लम है मुंबई में. इसलिए अरे तो सरकार चुनिए और पूछिए अपनी सरकार से क्यों जॉब्स नहीं मिल रहे. ये क्या मतलब हुआ? सरकार जब चुनेंगे तभी तो उनसे सवाल पूछ सकेंगे ना. आप इस बात को समझिए. जो चीज आपको वो लोग पूछ रहे हैं वही बड़ी बात है. दैट्स द बिगिनिंग. वो लोग पूछ रहे हैं. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं वोट नहीं करूंगा. नहीं, they are interested. नहीं, ये that's what I'm trying to tell you. They are interested to vote. They're interested to participate. If they were interested to vote, Chaitanya, they would have gone to the election commission website and enrolled themselves. ऐसा नहीं है लाइन में लगना पड़ता है अब. आप सीधे सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके एनरोल करना होता है. They have started. That's what I'm trying to tell you. You cannot put an unrealistic expectation. 60% of first-time voters have not done it. Chaitanya, we don't mean to harangue you because you're young, but 60% of first-time voters have not enrolled themselves. That is worrying for India's democracy. I'm not saying it's not. I'm not saying it's enough. I'm saying this is the beginning. It's going to increase.
That's what I'm trying to tell you. That Let's see. 1.75 crore voters in Let's Maharashtra see. who are young who are going to vote. It is a beginning. So don't say they are disinterested. You can say that some Okay. may not choose to go to vote, but the tide is slowly Bhai, changing. 60% is not some. My dearest friend Chaitanya, 60% is not some. 60% is majority. Some hota if 30% had decided not to enroll themselves and 70% had enrolled themselves. 47% In of this the case, a parliament- majority have decided not to enroll themselves. I'll give the last word to Naved. My producers are telling me to wrap the show, but this is an interesting debate and it's an important one. This is an important conversation that we are having. Naved, I have 10 seconds. You can have the final word. ओके श्रेया, थैंक यू सो मच। एंड चैतन्य को भी मैंने सुन लिया। देखिए, हो सकता है जो चैतन्य बता रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि उनकी बात समझी नहीं जाती, इसलिए वोट कास्ट नहीं करते। चलिए, मैं मानता हूं कि आपकी बात को नहीं समझा जा रहा, इसलिए आप वोट कास्ट नहीं करते। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर आप वोट कास्ट नहीं करते तो आपकी अगर एक बात नहीं समझी जा रही तो आपकी शायद 100 बातें नहीं समझी जाएंगी, फिर आपकी 1000 बातें नहीं समझी जाएंगी। उसके बाद आप किसी लायक नहीं बचेंगे कि आप एक बात को भी कह सकें कि मेरी बात कोई समझ देता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वोट कास्ट करना एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है। जैसे कि अभी श्रेया ने बताया कि लाइन में भी नहीं खड़ा होना पड़ता। जाइए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को। सिर्फ यही बहस हो रही थी ना कि रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए क्यों हम इस बहस पे लगे हुए हैं कि उनको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अरे ये बात की चीजें हैं, गवर्नमेंट बनने की बात की चीजें हैं। गवर्नमेंट बनने की शुरुआत नहीं करा रहे हैं वो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप अपनी पसंद की आईपीएल टीम बना लेते हैं, उसमें भी कुछ नहीं मिलता ना आपको। मैं एक बात बता रहा हूं, गवर्नमेंट तो फिर भी शायद नौकरी दे देगी, आईपीएल टीम से कुछ नहीं मिलेगा आपको। मूवी जब दिमाग में बनाते हैं ना, आप मूवी अपने दिमाग में बना लेते हैं, उसमें तो कोई नहीं देता ना स्टार आपको। गवर्नमेंट आपको बहुत सारी चीजें देती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। वोट कास्ट करने में इतनी दुश्वारी क्यों आ जाती है कि नहीं यार, ये इससे कुछ नहीं होता, फिर बैठे रहिए ऐसे, फिर पूरी जिंदगी बैठे रहिए ऐसे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, खासतौर से यंगस्टर्स से, जो यूथ है, प्लीज आपका हक है। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है आपके काम, छीन लीजिए ना। आप अपनी मनमर्जी करवाइए ना, इस मुल्क में अपनी सरकार चलवाइए ना, लेकिन उसका एक ही तरीका है, वोट करना। अदरवाइज आप दुनिया भर का कोई भी काम कर लें, कोई फायदा नहीं हो सकता। Okay, to all our young friends who are watching, please register yourself. The Election Commission is very worried, and India's democracy is deeply worried if young people show this level of disinterest in the election process. We'll leave it there. Chaitanya, thank you very much. We heard you, and thank you very much for being the voice of young people. 5 seconds that Okay, chalo, you can. 10 seconds, so that, call out. yeah. Yeah, okay, a call out. Go to ahead, 10 everybody that seconds. Okay, a call out to everybody that is listening. I know that elections are right around the corner. Make sure that you are not only registered, but you cast your informed vote in this election by reading guides, by understanding and interpreting. Important. Just don't go out and vote just for the sake of it. Make sure you elect a representative that truly represents you and works for you for the next 5 years. And we will be releasing guides for you on our website, which is markyourpresence.org.in. Okay. And you can access everything to make an informed choice to vote in your election. Thank you. Okay. Thank you, Chaitanya, for joining us. Naved, thank you very much for joining us. Ladies and gentlemen, if you have any young people around you, please encourage them to at least go and register themselves. And once they've done that, even if you have to force them, just pull them out of bed and take them to the voting station. It's important for them to be involved in India's democratic process. We'll take a quick break here. There's more on the other side. The Congress has released its manifesto. A lot of focus is on young people, but is it doable? That's what we are talking about in just a bit. Do stay with us.